जी अस्सलाम वालेकुम. That's our lecture 3. In this lecture, we will discuss what is business organization. Then we discuss what is the scope of business organization. Then we discuss importance of business organization. What are the prerequisites of business, function of business. Then we discuss about sole proprietorship, characteristics of sole proprietorship, and then discuss the advantages and disadvantages of sole proprietorship. सबसे पहले आ गया बिजनेस. Business organization act of grouping activities into effective cooperation to obtain the objective of the business. तो बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि हम एक्टिविटीज़ को ग्रुप करते हैं ताकि हम इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सकें और हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें. इन अदर वर्ड्स ऑफ एल एच हैने, it is more or less independent complex of land, labor and capital organized and directed for प्रोडक्टिव पर्पस बट एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि आपका 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज़ लैंड, लेबर एंड कैपिटल, तो और एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो उसी चीज़ को हम देखते हो कि आपका कोई भी बिजनेस है वो किस पे बेस करें, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, ताकि हम उससे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकें विद योर एंटरप्रेन्योरियल मैनेजरियल एबिलिटी, और साथ साथ उसको हम मैनेज कर सकें. फिर हमने कहा गोल शुड बी स्मार्ट. अब हमने कहा जब भी हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो अपने गोल सेट कर रही है, दैट शुड बी स्मार्ट मीन स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए. विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड हम उन गोल्स को अचीव कर लें. फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि हम कहते हैं कि ख्वाजा फ्री यूनिवर्सिटी ने कहा कि इस साल हम 3000 एडमिशन करेंगे. दैट एडमिशन स्मार्ट है, ठीक है, स्पेसिफिक है, मेजरेबल है. मेजर कर सकते हैं कि फॉल 2020 में कितने एडमिशन हुए, हम उसको अटेन कर सकते हैं बाय डूइंग सम स्ट्रेटजिक थिंग. देन रेलेवेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और टाइम बाउंड है कि यानी कि हमारे पास जो फॉल का टाइम पीरियड है उसी के अंदर हमने वो तमाम एडमिशन जो है वो कंडक्ट करने हैं. देन स्कोप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू सो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो सकती हैं, या कोई भी कम्बिनेशन चल सकता है. सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप आ गया. सबसे पहली जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? इट इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन मैन. ये क्या है, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक सिंगली ओन पर्सन चाहिए. लाइक इफ़ आप एक मेडिकल स्टोर ओपन कर रहे हैं तो आपका वो सिंगली ओन पर्सन आएगा, तो वो क्या आएगा, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है. अब sole proprietorship basically is an oldest form of business organization which is owned and controlled by one person. In this business, one man invests his capital himself. He is all in all in doing his business. He enjoys the whole of the profit. The features of sole proprietorship क्या होंगे? Easy to form है, unlimited liability है, ओनरशिप है, प्रॉफिट आपके पास मार्जिन ज़्यादा होते हैं, मैनेजमेंट और इजी टू डिज़ोल्व है, आप उसको आसानी से ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि सिंगली ओन है, इसमें आपकी कोई पार्टनरशिप नहीं है. फिर आता है पार्टनरशिप. जो पार्टनरशिप है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू एक्ट 1932. अब पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन between persons who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all. अब ये वाले, अब यहाँ पे एक बंदा काम नहीं कर रहा, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. पार्टनरशिप मीन्स अ लॉफुल बिजनेस owned by two or more person. The profit of business shared by the partners in agreed ratio. आप इसमें जो प्रॉफिट है वो एग्रीड रेशियो के मुताबिक डिवाइड होता है अमंग द पार्टनर्स. द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड. स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस एक्टिविटीज are performed under this organization also has the features like legal entity, profit and loss distribution, unlimited liability, transfer of rights, management and number of partners. फिर आता है आपके पास जॉइंट स्टॉक कंपनी. A company is an incorporated association of persons formed usually for the pursuit of some commercial purpose. A joint stock company is voluntary association of persons created by law. It has a separate legal entity apart from its member. एक separate legal entity होगी. It can sue and be sued in its name. In the joint stock company, the work of organization being
begins before its incorporation by the promoters and continue after incorporation. The joint stock company has the following features like creation of law, separate legal entity, limited liability, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स एंड कॉमन सील। बेसिकली जो आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी जितनी भी कराची स्टॉक एक्सचेंज या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज हैं वो क्या होती हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं जो कि अपनी कंपनी के नाम के साथ ही रजिस्टर्ड होती हैं। देन आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेशन इज एन एक्शन ऑफ पर्सन वॉलंटरीली यूनाइटेड फॉर यूटिलाइजिंग रेसिप्रोकली their own forces, resources, or both under mutual management for their common profit or loss. Cooperative societies are formed for the help of poor people. It is formed by economically weak persons of the society in the form of organization. All members enjoy equal rights of ownership. The feature of cooperative society are easy to form है, protection of mutual interest है, limited liability है, equal distribution of wealth and equal rights है। वट आर द प्री रेक्विजिट ऑफ बिजनेस। जब भी हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके सबसे पहले प्री रेक्विजिट्स क्या हैं। स्टार्ट करने से पहले हमने कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमने कंसीडर करना होता है वाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस। सबसे पहले सिलेक्शन है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस इज इट्स सिलेक्शन। इफ वंस अ बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू चेंज इट। वन शुड मेक डिटेल इन्वेस्टिगेशन इनटू द सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। सबसे पहला जो चीज़ आ गया, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लाख रुपया है तो आप सबसे पहले सोचेंगे कि मैंने कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना है। अब ये क्या है, सिलेक्शन की फेज़ है। मैंने 10 लाख से कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट ओपन करना है, मैंने 10 लाख से जनरल स्टोर बनाना है, मैंने 10 लाख से मेडिकल स्टोर बनाना है। इट्स अप टू यू एंड नाउ यू हैव टू सेलेक्ट आफ्टर स्टडिंग द मार्केट। अब वह सिलेक्शन कब होगी, जब आपके पास एक पूरी मार्केट की इंफॉर्मेशन होगी जहाँ पे आपको पता होगा कि मार्केट की क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। देन फिजिबिलिटी रिपोर्ट। A person should prepare the feasibility report about the business to be started. This report will provide the facts and figures whether business is profitable or not. Before starting a business, आप एक feasibility report बनाते हैं। आप देखते हैं कि क्या मैं जो काम करना चाह रहा हूँ ये feasible भी है या नहीं, क्या ये मेरे, अब उसको आप क्या देखेंगे, उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिहाज से आप देखेंगे कि क्या आपका वो बिज़नेस प्रॉफिटेबल भी है या नहीं। कितने अरसे, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग 10 लाख रुपीज़ इन अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट, इन हाउ मैनी ईयर्स आई कैन रिकवर माई 10 लाख रुपीज़, कितने सालों में मुझे 10 लाख रुपया वापस आ जाएगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो वो क्या है, आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं। देन नेचर ऑफ बिजनेस। There are various type of business like manufacturing, trading and services. The businessman should decide what type of business he would like to start. तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि भाई मैंने कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, ट्रेडिंग में जाना है या मैंने सर्विस सेक्टर में जाना है। Then demand of product. The businessman also keep in view the demand of the product which he wants to sell. If the demand is inelastic, the chances of success are bright. If the demand of product is irregular, seasonal और अनसर्टन, सच बिजनेस शुड नॉट बी स्टार्टेड। अब आप ये क्या है कि आप उसमें डिमांड को आइडेंटिफाई करेंगे कि जो मैं प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में लेके आ रहा हूँ उसकी क्या डिमांड है। क्या मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं लेके आ रहा कि जिसकी मार्केट में डिमांड ना हो, इरेगुलर हो या सीजनल हो, तो वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा। तो आपने उस प्रोडक्ट की डिमांड को भी आइडेंटिफाई करना है। देन द साइज ऑफ द बिजनेस। The size of the business means scale of the business. The size of business depends upon the demand of commodity in the market and organizational ability of entrepreneur. The determination of size of business is important decision of a person. अब आप कितने स्केल पे अपने बिजनेस को लेके जाना चाह रहे हैं वो आप आइडेंटिफाई करेंगे। देन availability of capital. Availability of capital is an important factor in the business. Capital is required for the purchase of land, machine, wages, and raw materials. A businessman must decide that how much capital he can arrange. तो आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मैं कितना कैपिटल अरेंज कर सकता हूँ, मेरे पास कितना कैपिटल है टू परचेजिंग द मशीन, लैंड एंड वेजेस। देन business location. A businessman has to select the place where he wants to start his business. He should select that place where raw material, cheap labor, and transportation facilities are available. He should also check the location of business competitor. Like अगर हम डिसाइड करें रहीम यार खान हो गया, मुल्तान हो गया, दैट आर द लोकेशन वेयर यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस, क्योंकि वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन का इशू नहीं है, वहाँ पे आपको रॉ मटेरियल का इशू नहीं है। तो आप कहीं भी जब, और
चीप लेबर का भी इशू नहीं है। तो आप कहीं भी जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरे पास कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँ, ईजी टू स्टार्ट हो और मेरा वहाँ पे एक्सपेंसेस कम हो। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी, द बिजनेस should also carefully consider the policies of government before starting a new business. Some areas are declared as tax-free zones, and for some particular business, the loan is provided without any interest. तो आप यहाँ से आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी चेक करेंगे कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं रिगार्डिंग स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। देन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, availability of raw material is essential to produce the goods at low cost. Sometimes the raw material is to be important, which may create problem for him. So a businessman must keep this factor in mind. तो आपको बात दफ़ा हो सकता है रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़े। जब आप इंपोर्ट कर रहे होंगे उस रॉ मटेरियल को तो उदाहरण खास कोई इश्यूज आते हैं तो वहाँ पे आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी बिकॉज दैट रॉ मटेरियल इज़ नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री, सो यू हैव टू इम्पोर्ट दैट मटेरियल। सो आप जब भी बिज़नेस स्टार्ट करें तो आप देखेंगे कि उसका रॉ मटेरियल क्या रेडिली अवेलेबल है इन योर एरिया या नहीं। देन है अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स। Availability of new machine is also an important factor for a business. A businessman must see whether these machines are easily available inside the country or not. If these are not if these are to be imported, then it may create the problem for him. फिर आप देखेंगे कि मैं जो मशीन मंगा रहा हूँ क्या वो मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेंगी या मुझे अपने ही मुल्क से रेडिली अवेलेबल है। सेम एज अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, skilled and efficient labor is essential to run the business and profit. If efficient and skilled labor is not available where business is going to be started, then it will not be profitable. तो आप जब बिजनेस स्टार्ट करें तो आप ये भी देखेंगे क्या मुझे उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाने के लिए स्किलफुल लेबर मिल जाएगी या नहीं। देन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, quick and cheap means of transportation are essential for low cost of production and high profit rate. A businessman must keep in view this factor. आपने अपने ट्रांसपोर्टेशन मोड को भी देखना है कि जब मैं एक फिनिश प्रोडक्ट बना लूँगा तो मैं उसको कस्टमर तक कैसे डिलीवर करूँगा। Then power resources. There must be availability of power resources like water, oil, coal and electricity. So businessmen must keep in view this factor. Hiring employees. A businessman must hire the efficient and competent employees in the business. The proper training must be given to the employees. तो जब भी आपने एम्प्लॉय हायर करना है तो आपने उसको ट्रेन भी करना है, उसको डेवलप भी करना है ताकि आप उसको एक स्किलफुल एम्प्लॉय बना सकें। देन प्रोडक्ट प्राइसिंग, a businessman must decide the price of his product. In the beginning, the price must be low. He must keep in view that whether he will cover cost of his product and other expenses with such price. तो आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी इस तरह से रखनी है कि आप देखें कि आप अपने एक्सपेंसेस को भी मीट कर सकें और थोड़ा सा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकें। These basically जब भी हमने previously discussed किए, these are the prerequisites of the business. Now function of business, that is production. First function of business is production. Production of goods and services is the first main function of the business. The production must be regular. The goods and services must be produced in such a way which can satisfy human needs. So when you are producing any goods and services, you should keep in your mind that that product and services should satisfy the customer needs and wants. Then second function of business is finance. It is also an important function of the business to secure finance. Finance is required for establishment and expansion of business. There are two sources of raising funds. One is the owner capital and other is borrowed fund. For example, if you have to extend the industry, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो आप अपने कैपिटल को यूज़ करेंगे, ऑनर्स कैपिटल फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे, या यू कैन गेट सम लोन फ्रॉम द बैंक्स, तो वो क्या आपका बोरोड फंड्स आ जाएंगे। देन मैनेजमेंट फंक्शन, टू डू थिंग्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इज़ नोन एज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के जब फंक्शन की हम बात करेंगे, कोई भी बिजनेस है वो उस वक्त ही सक्सेसफुल होगा, फ्रूटफुल होगा जब हम उसको एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में मैनेज कर रहे होंगे। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आपके पास प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडिंग है, कंट्रोलिंग है एंड
स्टाफिंग है। सबसे पहले प्लानिंग में आप अपनी स्ट्रेटजीज़ को प्लान आउट कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में यू हैव टू ऑर्गेनाइज द रिसोर्स, ताकि आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसके ऊपर एक्ट अपॉन कर सकें। फिर आपको एक लीडिंग चाहिए होती है, जो कि उसको लीड कर रहा होता है, डायरेक्ट कर रहा होता है। कंट्रोलिंग में आप मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं क्या हम उन स्टैंडर्ड्स को अचीव कर रहे हैं, बेंचमार्क को अचीव कर रहे हैं। एंड देन स्टाफिंग, द स्किलफुल एम्प्लॉय आर आल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन मैनेजमेंट, कि आपके पास जो एम्प्लॉय हैं क्या वो स्किल, फॉर एग्जांपल गूगल है, आईफोन है, वो किस पे बेस कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ पे बेस कर रहा है, उन्हीं की बेस पे वो इनोवेशन लेके आ रहा है इन द market. The management also provide direction for all subordinates. Then marketing. Marketing involves the design of the product acceptable by the consumer and the conduct of those activities which facilitate the transfer of ownership between seller and buyer. So marketing, goods are moved from producer to consumer. It is an important function of the business. This function includes buying, selling, transportation, product designing and storage. The concept of marketing mix is very important in marketing. It includes 4 P's: product, price, place, and promotion. So in marketing chapter, we discuss these 4 P's in detail. Basically, in marketing, you have to identify the needs and wants of the customer. After identifying it, you make and tailor the product according to needs and wants, so you satisfy the customer. If your customer is satisfied, then you will be able to regain and to increase your revenue. Same as when we are discussing about the marketing mix, there are 4 P's. One is the product, in which we decide the quality of the product. Then in price, we set the pricing of the product. In placement, we make a distribution channel to deliver the product to the customer. And promotion, we organize some awareness campaign in which we aware the customer about the product and services. Then research and development. Research is also an important function of any business. Research is a search for new knowledge. By research, business becomes able to produce improved and new goods. This research of two types: basic research and applied research. Then हमारे पास आता है आपके पास sole proprietorship. What is sole proprietorship? Sole proprietorship is a simple and oldest form of business organizations. Its formation does not require any complicated legal provision like registration. It is a small scale work at its own and controlled by one person and operated for his profit. It is also known as sole ownership, individual partnership, and single proprietorship. So basically, when you are planning to start a general store, when you are planning to start a medical store, there you just a single person start that medical store, so he is a single ownership, and it is a small scale business that is run only to raise the profit, to increase the profit, and to gain some revenue. So what are the characteristics of sole proprietorship? One is the capital, easy dissolution, and easily transferable. Capital: in sole proprietorship, the capital is normally provided by the owner himself. However, if additional capital is required, such capital can be increased by borrowing. For example, आप एक मेडिकल से एक और मेडिकल स्टोर खोलना चाह रहे हैं, तो आप हो सकता है बैंक से लोन लेके वो मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर दें. Then easy dissolution. The sole proprietor can easily dissolve as there are no legal formalities involved in it. Easy to transferable. Such type of a business can easily be transferred to another person without any restriction. Then freedom of action in sole proprietorship. सिंगल ओनर इज द सोल मास्टर ऑफ द बिजनेस, क्योंकि एक ही बंदा है वही उस बिजनेस को चला रहा है, तो उसके लिए फ्रीडम है, वो कोई भी एक्शन ले, कोई भी डिसीजन ले. देन फॉर्मेशन. Formation of sole proprietorship business is easy as compared to other businesses because it does not require any legal formality like registration. Legal entity. In sole proprietorship, the business has no separate legal entity apart from the sole traders. Then legal restriction. There are no legal restrictions for sole trader to set up the business, but there may be legal restriction for setting up a particular type of business. Then limited life, the continuity of sole proprietorship based on the good health or life or death of the sole owner. In sole proprietorship, the control of management of the business lies with the sole owner. Ownership of the business in sole proprietorship owned by one person. Similarly, the profit. The single owner bears full risk of the business, जो कि जिसने business start किया है वही risk bear कर रहा है और वही profit gain करेगा. Size. The size of the business is usually small. The success of business and goodwill of the sole proprietor totally depend upon the ability of the sole owner
Sole proprietorship can easily maintain the security of the business. Then unlimited liability. अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या आ गई? अ सोल प्रोप्राइटर हैज़ अनलिमिटेड इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस. अगर आपका बिजनेस ख़त्म होता है, इवन द पर्सन इज आर यूज बाय द ओनर टू पे ऑफ द डेट्स एंड अदर लाइबिलिटीज. अगर आपका बिजनेस ख़त्म होता है तो आपको अपने पर्सनल एसेट्स को भी बेच के वो डेट्स और लाइबिलिटीज़ को फुलफिल करना पड़ेगा. तो वो क्या है? आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. What are the advantages of sole proprietorship? It's easy to start. Proprietors, single owner is in charge. Proprietor keep all the profit. Tax is lower than the corporation. Sole proprietorship major disadvantage of owning a sole proprietorship is that owner has unlimited liability. जैसे मैंने पहले कहा कि when the owner is responsible for company debts. What are the disadvantages of sole proprietorship? Limited access to credit, may run out of money. The owner may not have the necessary skills to run the business, to manage the business. The business ends when the owner dies. So that's the end of this chapter. Thank you for your listening.